Hello, everyone. Welcome to the second class of YouTube revision for ACC SBL with Lakshya, with me, Janki J. Panchal, and we are going to do this in Hindi. Okay? So, कल जो मैंने आपको बताया था, दो टॉपिक्स थे, मैनेजिंग स्ट्रैटेजिक चेंज एंड लीडिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. राइट? कल जो हमने समझा था, दैट वाज अबाउट द थियरी पार्ट. राइट, थियोरी कैसे हैंडल करते हैं या फिर जो हमने मॉडल्स देखे थे वो मॉडल्स कैसे शो करेंगे. राइट, सो आई वाज जस्ट डूइंग दैट यस्टरडे. कल हमने सिर्फ उसका थियोरी पार्ट पढ़ा था. लेकिन एज दे से दैट मैनुअल्स पढ़ने से स्विमिंग नहीं सीखी जाती. राइट, सो द सेम लॉजिक सिट्स हियर. जब तक हमें एक्चुअल क्वेश्चन नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा कि क्या कीवर्ड्स है. ठीक है, जो हमको क्वेश्चन में ढूंढने हैं जिससे हमको वो आंसर अच्छे से पता चले. राइट, तो वो क्या क्वेश्चंस है. कल जो हमने मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज के मॉडल्स किए थे, राइट, उसमें की टर्म्स थे थोड़े से. जैसे अगर कर्ट लेविन का मॉडल ले लो तो वो रेजिस्टेंस टू चेंज के लिए था. राइट, अगर बोलेगन एंड होप हेली का मॉडल ले लो तो वो एक कॉन्टेक्चुअल चेंज के लिए था. राइट, अगर हम कॉटर एंड शेसिंगर की बात करें तो वो लोग लीडरशिप पे फोकस कर रहे थे. isn't it right? एंड अगर हम स्टार्टिंग के JSW मॉडल की बात करें तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, अडॉप्टेशन, रिवॉल्यूशन, इंक्रीमेंटल एक्सेट्रा, दीज टर्म्स वर यूज्ड है. राइट, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली वी नो कि मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज पे है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगी और ये कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है और अगर क्वेश्चन में एक मॉडल डालने की जरूरत है या नहीं. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मॉडल आपको याद है तो वेल एंड गुड. राइट, अगर आपको मॉडल याद है तो आप मॉडल यूज करो 100%. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको मॉडल याद नहीं है तो आप उस पर ज्यादा स्ट्रेस लो, उससे ज्यादा एंक्शस हो जाओ और सोचो अरे मुझे पेपर आता ही नहीं है. राइट, बिकॉज वैसा नहीं होने वाला है. अगर आप एग्जैक्ट मॉडल रेप्लिकेट नहीं कर पाते हो एग्जाम में और आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन में से क्वेश्चन थोड़ा सा पेस्टल मॉडल के पॉलिटिकल पे जा रहा है. राइट, तो पेस्टल में से पॉलिटिकल उठाओ. राइट, अगर एंड्स ऑफ मैट्रिक्स में डाइवर्सिफिकेशन पे जा रहा है तो डाइवर्सिफिकेशन उठाओ वहां से. राइट, पूरा का पूरा मॉडल आपके एक क्वेश्चन में आए या फिर सूट हो वैसा जरूरी नहीं है. ठीक है, आप पिक कर सकते हो इंफॉर्मेशंस डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स से जो आपने पढ़े होंगे. राइट, और अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मॉडल यूज करने की बात होती है, अगर बोलते हैं कि सीधा मॉडल यूज करो, डायरेक्ट मॉडल यूज करो, देन डेफिनेटली तो कोई ऑप्शन है नहीं. लेकिन मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं जो प्रॉपर एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस है उसमें वैसा होता है नहीं. राइट, दे गिव यू ओपन एंड ऑन इट बट दे डू गिव यू हिंट्स इन द क्वेश्चन. जैसे अगर मैक्रो इन्वायरमेंट है, राइट, तो आप क्या बात करोगे, आप बात करोगे पेस्टल की. राइट, कंपटीशन की बात हो रही है, पोर्टस 5 फोर्स याद आ जाएगा. नेशनल एडवांटेज की बात हो रही है तो नेशनल एडवांटेज का मॉडल याद आ जाएगा. टैलेंट मैनेजमेंट, पॉपिट, कंटेक्चुअल, पोलोगन एंड होप हेली का चेंज मॉडल. राइट, सो जब आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो नेसेसरी नहीं है कि आप सारे मॉडल्स को बाय हार्ट करो. ठीक है, वो वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. लेकिन हर मॉडल का क्या पर्पस है, हर मॉडल का क्या कीवर्ड्स है, उसको याद रखोगे तो वो मॉडल आपको तुरंत एग्जाम में याद आ जाएगा. तो ये टेक्निक आपको जो हमने, क्योंकि जब मैंने अपना लक्ष्य के साथ प्रोग्राम किया था तो अबाउट 30 मॉडल्स थे. राइट, जो हमारे सिलेबस में है SBL के. सो इतने 30 याद रखना फिर उसमें से सिलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन अगर हम कीवर्ड्स याद रखें तो ओवरऑल हमें बेनिफिट मिल जाता है. राइट, let's go to this question. Pharmacy Systems International, how would we go about it? मैं आपको पैरा बाय पैरा, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, और इसको आप ऐसे अज्यूम करिए कि यू आर लुकिंग एट अ प्रीसीन मटेरियल, क्योंकि प्रीसीन मटेरियल भी आपके पास 15 डेज एग्जाम से पहले आ जाने वाला है. तो आपके पास बहुत टाइम है कि आप वो प्रीसीन मटेरियल को भी अच्छे से पढ़ ले.
राइट। नॉर्मली जब 4 आवर्स का एग्जाम पेपर होता था तो स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं रहता था, राइट। 45 मिनट्स में वो प्रीसीड मटेरियल या फिर सारा इंफॉर्मेशन पढ़ना एंड देन आंसर लिखना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। यहाँ पे आपके पास एज है कि आप पहले से पेपर देख सकते हो, पेपर नहीं देख सकते हो लेकिन प्रीसीड मटेरियल दे सकते हो, 30 to 40% ऑफ द पेपर देख सकते हो, ठीक है। तो उसको अच्छे से यूज करेंगे एंड उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से समझ लेंगे, वो स्टोरी जो होती है ना वो स्टोरी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Pharmacy Systems International. Retail pharmacies supply branded medicinal products such as headache and cold remedies, as well as medicines prescribed by doctors. Customers expect both types of products to be immediately available, so this demands efficient purchasing and stock control in each pharmacy. The retail pharmacy industry is increasingly concentrated in a small number of nationwide pharmacy chains, although independent pharmacies continue to survive. The pharmacy chains are increasingly encouraging their customers to order medicinal products online, and doctors are being encouraged to electronically send their prescription to the pharmacy so that they can be prepared ready for the patient to collect. In the modern era which we are right now, हमको पता है कि ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट एवरी फार्मेसी यूज करता है, राइट। जब भी डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं अपने पेशेंट्स को, राइट, सो वो मेडिसिन आपको कल से परसों से या 4 दिन बाद नहीं लेनी है। डेफिनेटली अगर आप बीमार है तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, राइट। या फिर आपकी कोई लॉन्ग टर्म एलिमेंट है जैसे डायबिटीज हो गया या फिर हाइपरटेंशन हो गया या फिर थायराइड प्रॉब्लम हो गया, उसकी एक लॉन्ग टर्म मेडिसिन आपकी चलती जाती है टू कीप योर बॉडी इन द कंट्रोल दैट इज रिक्वायर्ड, राइट। सो फार्मेसीज का यूजेज ही वो है कि वो लोग एडहॉक बेसिस पे आपको हेल्प में आए, राइट। ऐसा नहीं है कि आज मैंने मेडिसिन ऑर्डर की, फार्मेसी वाला 2 दिन के बाद, मैम 3 दिन के बाद आएगा, चलेगा, राइट। यू वुड गो टू अनदर फार्मेसी, यू वोंट स्टिक टू दैट फार्मेसी। सो फार्मेसीज का मोस्टली क्या है कि दे हैव टू स्टॉक अप एटलीस्ट द फास्ट रनिंग मेडिसिन, राइट। दूसरी बात यहाँ पे क्या करी है कि अब फार्मेसीज और ज्यादा डिजिटलाइज्ड हो गई है। सो आप प्रिस्क्रिप्शन का स्क्रीनशॉट अपने फोटो से सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फार्मेसी में, एंड वो लोग आपकी मेडिसिन रेडी रखते हैं एंड वो मेडिसिन आप कलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज हाउ द सिस्टम इज वर्किंग एंड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज गिविंग अस लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट फार्मेसीज और उनके फंक्शंस। पीएसआई, दिस इज द कंपनी नाउ, राइट। पहले जो हमने पढ़ा वो एक जेनेरिक फार्मेसी का इन्फो था, अब हम कंपनी का इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं जो कंपनी पे हमें आंसर्स लिखने हैं। PSI is a privately owned software company which has successfully developed and sold a specialized software package meeting specific needs of retail pharmacies. PSI's stated objective is to be highly skilled professional company providing quality software service to the retail pharmacy industry. Over the last 3 years, PSI has experienced gradual growth in revenue profitability and market share. सॉफ्टवेयर कंपनीज फार्मेसीज में कैसे हेल्प होती है? फार्मेसीज में थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन रहती है, राइट। अब सारे मेडिसिन का पेन एंड पेपर या फिर मैनुअल ट्रैक रखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है एंड अगर आप देखो तो मेडिसिन पे बारकोड्स भी होते हैं, राइट। सो पीएसआई इज अ कंपनी जो रिटेल फार्मेसीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है जिससे कंपनी अपने स्टॉक्स ले सकती है, सेल कर सकती है, डिस्काउंट्स दे सकती है, एक्सपेंस शो कर सकती है, राइट। दीज आर बेसिक थिंग्स जो ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज बनाती हैं एंड पीएसआई ऑल्सो सेज कि वो हाईली प्रोफेशनल है एंड दे आर वर्किंग इन द रिटेल फार्मेसी इंडस्ट्री एंड दे वांट टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी। अब देखते हैं उनका रेवेन्यू ये बोलता है कि नहीं। लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू दिया हुआ है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एक्चुअली, ओके। थोड़ी से नंबर्स कंजॉइन हो गए हैं, इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं सेपरेटली।
राइट। सो ये जो वैल्यू है ये हो गई हमारी ओवर। सो या ये जो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2020, 21, 22, राइट। सो अगर आप देखो 2020 में कंपनी का प्रोडक्शन था 10,350, उसके बाद 10,760 एंड फिर 11,700। सो जब कंपनी बोल रही है कि लास्ट 3 इयर्स में उसने ग्रोथ किया है, इट इज शोन इन देयर रेवेन्यू। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी इनका ग्रेजुअल इंक्रीज स्टेज पे है। Estimated market share has also grown. Number of employees has also grown. Right? So whatever they are claiming to, they are definitely doing that. PSI has 3 directors, each of whom has a significant ownership stake in the business. The Chief Executive Officer, CEO, is a natural entrepreneur with a past record of identifying opportunity and taking the necessary risk to exploit them. So he's a risk taker. In the last 3 years, he has curbed his natural enthusiasm for growth as PSI has consolidated its position in the marketplace. However, he now feels that the time is right to expand the business to a size and profitability that makes PSI an attractive acquisition target. The CEO, as we can see here, is a risk taker. उनको risk लेना है, risk exploit करना है, right? And वो naturally enthusiastic person है जो PSI को overall एक better market position पे लाना चाहते हैं. He is also saying that अब अगर PSI को और expand करना है तो उसको एक attractive acquisition target बनना पड़ेगा. That means this company's CEO is looking forward for some good acquirers to take over PSI. He has PSI's attractive acquisition target and enables the director to realize their investment in the company. He has a natural ally in sales and marketing director, and both feel that PSI needs to find new national and international markets to fuel its growth. Every company has got its mindset कि उनको कैसे grow करना है, right? यहाँ पे the CEO already has a mindset कि भाई हमने अचीव कर लिया है जो हम हमारी कैपेसिटी के साथ अचीव कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर कंपनी को नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके आना है तो फिर कंपनी को डेफिनेटली एक अच्छा एक्वायरर चाहिए. The software development director, however, does not share CEO's enthusiasm for this expansion. जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, डायरेक्टर है एक्चुअली, he wants to stay where he is. He doesn't want to do what the CEO wants to do. The CEO has proposed that growth can best be achieved by developing a generic software package which can be used by the wider general retail industry. His plan is for the company to take the current software package and take out any specific references to the pharmaceutical industry. This generic package could then be extended and configured for the other retail sectors. The pharmaceutical package would be retained, but it would be perceived and marketed as specialized implementation to the new generic package. So here the CEO says that the growth can be achieved by developing generic software packages. पहले कंपनी क्या करती थी, रिटेल के लिए स्पेसिफिक या bespoke सॉफ्टवेयर पैकेजेस बनाती थी जिसमें भी कंपनी ने काफी ग्रो किया है. अब CEO wants to shift that or divert from that to generic software packages जो जनरल रिटेल इंडस्ट्री में ज्यादा सेल हो सके. His plan is for the company to take the current software package and take out any specific references to the pharmaceutical industry. Right? So उनको जो भी जनरल रिक्वायरमेंट्स होती है वो इन्फोर्स पिक करके उसको जेनेरिक जो सॉफ्टवेयर है उसमें यूटिलाइज करना है. This package could then be extended and configured to other retail sectors also. मतलब फार्मेसी से उठा के फिर आप और रिटेल सेक्टर्स में भी वो पैकेज को यूज कर सकते हो बिकॉज उसकी जो जैसे मैंने आपको टर्म्स बताए कि आइडेंटिफाइंग द इन्वेंट्री, राइट, इन्वेंट्री इनकमिंग, आउटगोइंग, रेवेन्यू जनरेटेड, एक्सपेंसेस, डिस्काउंट्स, अगर वो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है तो वो सारी ही एक बेसिक जेनरिक पैकेज बन रहा है तो उसको फिर आप और रिटेल सेक्टर्स में भी यूज कर सकते हो.
The pharmaceutical package would be retained, but it would be perceived and marketed as a specialized implementation of the new generic package. This proposed change in strategic direction is strongly resisted by the software development director. So again, this is also something जो software development director is not agreeing to. So if you see, software development director is not agreeing to two things what the CEO says. ना ही उनको जेनेरिक सॉफ्टवेयर बनवाना है, ना ही उनको एक एक्विजिशन के अंदर प्रमोट करना है. Now the reason. He and his team of software developers are under constant pressure to meet the demand of the existing pharmacies. Online ordering of medicinal products and electronic dispatch of prescriptions are just two examples of constant pressure PSI is under from their retail customers to continuously update its software package to enable the pharmacies to implement technical innovations that improve customer service. Right? So I can feel कि यहाँ पे resistance क्यों आ रहा है software development director का? Because one, कंपनी के पास staff कम है इन द सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट. टू, इनकी जो एग्जिस्टिंग प्रेशर है कंपनी उसी से सेटल डाउन नहीं कर पाती है. राइट. सो so from the software department there is a lot of things that are to be done and which are done under pressure. Ideally, the software development director would like to acquire further resources to develop a more standardized software package for their current customers. He is particularly annoyed by PSI salesmen continually committing the company to produce a customized software solution for each customer and promising delivery dates that software delivery team struggles to meet. Frequently, the software contains faults that require expensive and time-consuming maintenance. Consequently, PSI is being increasingly criticized by customers. A recent user group conference expressed considerable dissatisfaction with the quality of PSI's package and doubted the company's ability to meet the published deadlines for a new release of the software. So, अगर हम CEO के point of view से इस क्वेश्चन को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी इज डूइंग प्रीटी वेल. राइट. सेल्स कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहे हैं. लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डायरेक्टर या उसके डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि उनका जो टेक्निकल इशू है, जो इनका कोर प्रोडक्ट है, कोर प्रोडक्ट क्या है इनका, कि वो लोग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं. राइट. वो कोर प्रोडक्ट इनका थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में जा रहा है एंड देर इज अ डिटोरिएशन. सो सेल्समैन एक होते हैं, वो अपना काम करते हैं. राइट. सेल्समैन सेल्स करेगा, लेकिन जो हमारा डेवलपर है वो एक्चुअल में प्रोडक्ट डेवलप करेगा. राइट. जैसे लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ बेकरी. राइट. मैं जाके 50 ऑर्डर केक्स के ले आऊं, लेकिन बैकएंड में क्या मेरा किचन 50 केक्स बनाने की कैपेसिटी में है. राइट. तो जब मैं ऑर्डर लेके आ रही हूँ तो क्या होता है, सेल्स तो डेफिनेटली ग्रो दिखेंगे, लेकिन बैकएंड कस्टमर्स वुड नॉट बी हैप्पी. उनको वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है जो उन्होंने स्पेसिफाई करा था. Right? So this is how this question is shaping. कि the CEO is very good in taking the risk. उन्होंने ही probably sales staff को motivate किया होगा कि भाई सेल करो, मार्केट प्लेस बढ़ाओ, विजन बढ़ाओ, विजिबिलिटी बढ़ाओ. लेकिन बैकएंड में जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, जो इनका कोर प्रोडक्ट है, इनकी कोर एक्सपर्टीज है, वो ही ठीक से नहीं काम कर रही है. So let's see what the question says. The proposal to develop and sell a software package for the retail industry represents a major change in the strategy for PSI. Analyze the nature, scope, and type of this proposed strategy change for PSI. Proposal to develop and sell a software package for the retail industry is a major change. Company अब तक क्या कर रही थी? Company अब तक bespoke products retail pharmacies के लिए बना रही थी. CEO ने क्या suggest करा कि हम generic software packages बनाएंगे, which is a major change. We need to analyze the nature, scope, and type of this proposed strategic change. Right? So यहाँ पे तीन चीजें फोकस हो रही है. यहाँ पे नेचर की बात हो रही है, यहाँ पे स्कोप की बात हो रही है, और यहाँ पे टाइप ऑफ स्ट्रैटेजिक चेंज की बात हो रही है. राइट.
जब हम नेचर की बात करते हैं, राइट, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि किस टाइप का मूवमेंट है, किस टाइप का चेंज है, राइट। जब हम स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप इज कि जब कंपनी रिटेल इंडस्ट्री से जेनेरिक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बनाएंगी तो उनका स्कोप ऑफ ग्रोथ क्या है, राइट। जिससे बिल्कुल हमें, when we talk about scope, this is a key word which is directly connected to ends of matrix, right? तो जब हम शिफ्ट कर रहे हैं, मार्केट शिफ्ट हो रहा है ये टेक्निकली, सो मार्केट शिफ्टिंग इज मोर ओवर लाइक अ डाइवर्सिफिकेशन, राइट। तो स्कोप में हम डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर सकते हैं, राइट। एंड टाइप ऑफ प्रपोज स्ट्रेटेजिक चेंज, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज दिस, राइट। हमने मैनेजिंग चेंज में कल पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, रिवॉल्यूशन, एवोल्यूशन, अगर आपको याद है तो अडॉप्टेशन एक्सेट्रा। तो उसमें से ये कौन सा वाला चेंज है, राइट। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स है जो हमको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो स्ट्रैटेजिक चेंज, मतलब स्ट्रैटेजिक चेंज के मॉडल्स अगर आपको याद है यहाँ पे पुट करना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, क्वेश्चन में 3 डिफाइंड सेपरेट क्वेश्चंस है इंटरनली, कि नेचर क्या है चेंज का, स्कोप क्या है चेंज का, और टाइप क्या है चेंज का, राइट। तो हम तीनों को ही आंसर करेंगे, राइट। इट कांट बी अ जेनेरिक आंसर ऑन स्ट्रैटेजिक चेंज कि हाँ भाई मेरे को JSW का मैनेजिंग चेंज वाला मॉडल आता है, मैं वो डाल दूं और मैं पास हो जाऊं, वैसा नहीं होगा। क्वेश्चन डिटेल्ड है तो आंसर भी डिटेल्ड होना चाहिए। प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनालिसिस स्किल्स when investigating the nature, scope and type of this proposed strategic change। क्वेश्चन में बोला भी है कि 4 मार्क्स डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है ऑफ योर एनालिसिस स्किल्स, कि आप कैसे इस क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हो। भले ही ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन दिखे, लेकिन आपका फोकस 8 मार्क्स पे होना चाहिए कि अगर मैं ये 8 मार्क्स की इंफॉर्मेशन विच इज नेचर, स्कोप एंड टाइप अच्छे से लिखूं तो डेफिनेटली वो मेरे प्रोफेशनल मार्क्स को एनहेंस करेगा। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन को ऐसे समझ के चलोगे कि 8 + 4 12 मार्क्स है, राइट, और मुझे 4 4 मार्क का नेचर लिखना है, 4 मार्क का स्कोप लिखना है, 4 मार्क का टाइप लिखना है, तो वैसे आंसर नहीं बनेगा। SBL में वैसे आंसर्स बनते ही नहीं है, राइट। पॉइंटर वाले आंसर नहीं बनते हैं, वो हम स्किल लेवल में करते थे या फिर ग्रेजुएशन में करते थे, लेकिन प्रोफेशनल लेवल के पेपर में वैसे आंसर्स नहीं चलते। तो आपको इसकी एक स्टोरी बनानी पड़ती है, राइट। जैसे नेचर से शुरू होके फिर स्कोप पे, फिर टाइप पे, और फिर उसको एंड कर देना है, राइट। दिस इज हाउ वी विल राइट दिस आंसर। लेट्स गो टू द सेकेंड वन which is a 16 marks question। okay, I think पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं, फिर सेकेंड वाले पे फोकस करेंगे, राइट। नाउ बिफोर शोइंग द सॉल्यूशन लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ये जो आंसर्स आप ACCA CB प्लेटफॉर्म पे देखो या फिर ACCA स्टडी हब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देखो, राइट, कभी भी इनको रेप्लिकेट करने की, बाय हार्ट करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। ये आंसर्स मॉडल आंसर्स हैं विच आर टू गुड। अगर आप ये आंसर्स को देख के ओवरवेलम हो जाते हो, डर जाते हो, एंक्शियस हो जाते हो कि भाई मैं इतना अच्छे से नहीं लिख पाती हूँ, नहीं लिख पाता हूँ, तो आप अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं दे पाओगे, राइट। सो जब आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस को, तो आंसर पे जाने से पहले क्वेश्चन और सिनेरियो में से जो भी समझ में आ रहा है उसको ब्रेक डाउन करो इंफॉर्मेशन को, और उसके खुद के अपने आंसर्स लिखो एंड फिर कंपेयर करो, राइट। वो आपको अपना इंडिविजुअल आंसर देने में बेटर हेल्प करेगा, वो आपको कॉन्फिडेंस लाने में हेल्प करेगा, वो आपको स्पॉन्टेनियस बनाएगा। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं किसी भी पेपर में, किसी भी पेपर में जहाँ पे आप टेस्ट हो रहे हो, स्पॉन्टेनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेपर देख के डर गए हो तो वो 10 से 15 मिनट वहीं वेस्ट हो जाते हैं, राइट। सो स्पॉन्टेनियसली आपको आंसर्स को डील करना है, क्वेश्चन देख के जोन आउट नहीं हो जाना है, राइट। एंड वो जोन आउट आप कब नहीं होगे, जब आप एग्जाम से पहले क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करने की ट्राई करोगे, राइट। हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, ACCA में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में लर्निंग कर्व करके एक टॉपिक आता था, राइट। लर्निंग कर्व क्या होता है कि जब आप एक चीज बार बार करते हो तो क्या होता है, आप उसके एक बेस्ट टाइम पे पहुंच जाते हो, राइट।
जब आप एग्जाम से पहले अपने आप को टेस्ट करते हो, जैसे मॉक पेपर्स दे दिए, ऐसे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए, तो ये आपका एक लर्निंग कर्व बनता है, राइट? अगर सारे ही क्वेश्चंस देखे और इनके आंसर्स देख लिए, तो फिर अपने आप को टेस्ट नहीं किया तो लर्निंग कर्व अचीव नहीं किया, लर्निंग कर्व अचीव नहीं किया तो वो जो 3 hours 15 minutes मिले एग्जाम में 100 marks के लिए, वो कैसे जस्टिफाई करोगे, राइट? सो अपना जो भी लर्निंग पोर्शन है, जैसे कि जो भी अपना सिलेबस है कोई भी सब्जेक्ट का, उसको पढ़ने में 30-40% टाइम अपना लो। अगर 2 महीने का टाइम है आपके पास, 30-40% सिलेबस को पढ़ने में लो। उसके बाद का जो टाइम है ना, वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने में लो, से मे बी 30 more % टाइम क्वेश्चंस का आंसर देखने में लो। एंड जो रिमेनिंग के 20-30% टाइम आपके पास बचा हुआ है, वो टाइम अपने आप को टेस्ट करो। ऑनेस्टली इट विल डू वंडर्स टू यू। अगर पूरा ही टाइम सिलेबस पढ़ने में लग गए, तो एग्जाम किट के क्वेश्चंस कब सॉल्व किए, प्रैक्टिस किट के क्वेश्चन कब सॉल्व किए, स्टडी हब के क्वेश्चंस, सीबी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस, टाइम ही नहीं मिलता है, राइट? सो जब से पढ़ाई करना शुरू करते हो ना, वो एक डिस्ट्रीब्यूट कर दो टाइम के, भाई मैं 30% टाइम ही इसको दूंगा, 40% ही इसको दूंगी, एंड बाकी का यही टाइम है मेरा मॉक करने का, राइट? उससे वो स्पॉन्टेनिटी आएगा, उससे वो लर्निंग कर्व हिट होएगा। ओके, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन दैट इज गिवन हियर। अगेन सेइंग, ये आंसर्स बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं, एक्सपर्ट्स ने लिखे होते हैं, टू गुड होते हैं, राइट? हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, ये हमको समझ के चलना है, यहाँ से गुड थिंग्स लेनी है, एंग्जाइटी फियर लेके नहीं जाना है, इसमें से गुड इंफॉर्मेशन उठानी है। बार बार क्वेश्चंस के आंसर पढ़ते हो ना, तो इवेंचुअली उसको रेप्लिकेट करने लगते हो, तो वो स्टेज तक हमको जाना है, राइट? इसको बाय हार्ट करना है कि ये आंसर इतना बड़ा है, मैं तो इतना बड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ, वैसे आंसर्स नहीं लिखे जाते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के ऊपर अपने आंसर्स बनाओ, इसके साथ रिलेट करो, ठीक है? लेट्स डू strategic change analysis, nature, scope, and type. The proposal to develop and sell a software package for the general retail industry represents a major strategic change for PSI. Up till now, it has been relatively successful in identifying and servicing the software needs of the pharmacy market. Michael Porter terms it is currently a focused differentiator because वो क्या कर रहा है, वो bespoke products बना रहा है pharmacies के लिए, focused differentiator. Its proposed entry into the general retail market presents both a new product and a new market. And so, using a perspective of NSOF growth matrix, it is a diversification change with high levels of risk. The proposal would lead to significant strategic change and, perhaps not surprisingly, is meeting resistance from the software development director who is responsible for a key activity in this change. राइट? सो यहाँ पे दो मॉडल्स की बात हुई है, माइकल पोर्टर के फोकस डिफरेंशिएशन की एंड सॉफ्ट मैट्रिक्स की, राइट? द प्रपोजल इज ऑल्सो हैविंग अ रेजिस्टेंस फ्रॉम द सॉफ्टवेयर डायरेक्टर. JSW argues that there is a danger of believing that only one way or one best way to change the organizational strategy. अब जब आप खुद आंसर लिखते हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स नहीं याद रहेंगे, राइट? इसीलिए क्वेश्चन पे फोकस करके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उससे अपना इंडिविजुअल आंसर बनाओ, राइट? They believe that most strategies are profoundly influenced by early strategies and their success or failure. Consequently, strategies are often incremental in nature, adding to adopting previous existing strategies. राइट? सो जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, एक कंपनी अगर एक ही जेडेड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी के साथ चले तो वो शायद जो मार्केट शेयर अपना है उसको भी लूज कर जाती है, राइट? अगर नोकिया की बात कर ले, नोकिया सम इयर्स अगो, मे बी लाइक 20 years अगो, इंडिया में कितना ज्यादा अच्छे से चल रहा था, मतलब सबके पास ही नोकिया के फोन्स थे, राइट? अब नोकिया है मार्केट में नहीं है। स्ट्रैटेजीज अगर प्रोग्रेसिव नहीं होती है, प्रोडक्ट्स प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं, मार्केट शेयर कम हो जाता है, राइट? Consequently, strategies are often incremental in nature, adding to or adopting previously or existing strategies. Rarely is the proposed change so fundamental that it changes the existing business model.
जो यहाँ पे एक सिचुएशन है, राइट? सीईओ क्या बोल रहे हैं कि हम बिजनेस मॉडल ही चेंज करते हैं। कंपनी क्या बनाती थी? bespoke फार्मेसी के लिए सॉफ्टवेयर। कंपनी को अब क्या बनाना है? जेनेरिक सॉफ्टवेयर फॉर रिटेल इंडस्ट्री। शिफ्ट। JSW make use of a model developed by Bologan and Hope Haley, क्योंकि वो एक मॉडल डेफिनेटली है जो हमने पढ़ा था कल, and it identifies four types of changes which have different degrees of impact. JSW का मैनेजिंग चेंज एंड Bologan Hope Haley का नेचर ऑफ चेंज। नेचर ऑफ चेंज मीन्स जो शिफ्ट है, जो मूवमेंट है, वो कितना बड़ा है, right? How big is the shift from what it is doing currently? Is it incremental or is it a big bang? Second thing, how big is it? As I said, incremental or step by step. Changes does not change the existing way of doing things and may indeed reinforce the organization's process and culture. It is therefore likely to meet less resistance than Big Bang or quantum change, which represents significant change to most or all of the organizations. Often, this Big Bang change is necessary to respond to a crisis facing the firm, such as a major fall in profitability or the appointment of a new CEO. Right? So, incremental step or a Big Bang step. Right? यहाँ पे अगर कंपनी स्लोली स्लोली मूव फॉरवर्ड कर रही है क्योंकि वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना रही है, राइट? तो वो एक इंक्रीमेंटल स्टेप है, राइट? पहले bespoke सॉफ्टवेयर बनाती थी फार्मेसीज के लिए, अब उसको बनाना है जेनेरिक सॉफ्टवेयर, लेकिन सॉफ्टवेयर रीजन्स में ही काम करना है। The scope of the change process is important. How much the firm's activities are to be changed. If the change does not alter the basic business model, it is regarded as a realignment of strategy rather than fundamental change in strategic direction. However, if the proposed change is a radical challenge to the existing business model or paradigm, then it is regarded as a transformational change. Right? The consideration of the two key measures of change. अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे। नेचर ऑफ चेंज पता चल गया कि ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। स्कोप पता चलता है कि कितना इम्पैक्ट है उसका और कितना बड़ा चेंज है। एंड टाइप, टाइप मतलब वो हमारा इवोल्यूशन अडॉप्टेशन वाला, राइट? अब जब हम टाइप्स ऑफ चेंजेस की बात करें तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ चेंजेस, राइट? एक है अडॉप्टेशन, which is where the current business model is and it occurs, changes there in the current business model and it occurs incrementally, right? धीरे धीरे आप अडॉप्ट करते हो न्यू शिफ्टिंग्स के लिए। Reconstruction represents significant change in the organization, often prompted by crisis such as unwelcome takeover bid, but it does not require a fundamental change to the business model. Turnaround strategies where the aim is to rapidly reduce cost or increase revenue to ensure business survival may affect. जब इवोल्यूशन की बात करते हैं, it is where the which requires business model to be significantly changed over time, right? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लेकिन वो कंप्लीट मेकओवर हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और रिवॉल्यूशन मतलब the whole organization of the scope is having a fundamental shift. Would dispassionately, it appears that PSI proposed to move to a general retail market, which is an evolutionary change. उनके पास सारी चीजें हैं, राइट? जो एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हेल्प होगी, वो अपना ग्रोथ डाइवर्सिफाई करके दूसरी मार्केट में जा रहे हैं, राइट? सो इट्स नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द वे इट वर्क्स. It's not something which is going to be a revolution. It's not going to be something which is going to be a adaptation, right? So it is more of something which is going to be an evolution, right? जो है उसको लेके आगे shift over. It is incremental because it will build on the skills, routines, and beliefs of those in the organization. However, it is a transformational because the proposed move away from the current market niche to a market which is a generic one.
It is likely that internal process and activities will need to be significantly changed for the company because पहले क्या होता था, आप bespoke product बनाते थे और अब क्या बनाओगे, आप quantity ज़्यादा बनाओगे और आप generic product बनाओगे. In PSI's case, evolution is driven by top down, by the CEO's desire to create a company which is an attractive acquisition. The three directors may not all perceive to the change of evolutionary, and the entrepreneurial CEO and the sales marketing director may see the proposal as an adoptive change. Realigning the company to make advantage of a business opportunity will lead to realizing their personal goals. Because CEO and sales marketing director, they want the company to be taken over by a good bidder, whereas the software developer is not happy about it. उनको ये टेक ओवर वाली चीज ज्यादा पसंद नहीं आ रही है. Indeed, they may see the current product as just the specific implementation of a general retail software solution and contrast the software development director who is more likely to agree with our assessment of a change in evolution, right? So there is also a chance कि जो दो directors है apart from the software director are also moving into generic retail industry because उनका जो visibility है वो increase हो जाएगा, right? And obviously the software guy is still not happy with this decision. So यहाँ पे जब question आता है, as I said earlier also, strategic change का एंड आप इसको जस्टिफाई ना करो नेचर स्कोप एंड टाइप से तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? उसका आंसर देना डिफिकल्ट हो जाता है. स्ट्रेटेजिक चेंज किस टाइप का है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका क्या स्कोप है मूवमेंट का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन गो टू द टाइप ऑफ इट, राइट? इन योर एग्जाम यू डोंट इवन हैव टू राइट ऑल the four types of changes. You can just stick to your change and discuss it, right? Even if you don't want to use this model, फिर भी चलेगा, right? आप अपना जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू दो, लेकिन वो जस्टिफाइड होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, राइट? शायद एग्जाम में सारा मॉडल याद ना रहे, राइट? कौन से पॉइंट्स थे याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता है आप कौन से पॉइंट पे बात कर रहे हो, आपको पता है अगर ऑथर, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखो, जस्टिफाई करो, कन्विंसिंगली लिखो आंसर, राइट? Let's look at the second question. The success of an attempt at managing change will be dependent on the context in which the change takes place. Prepare a consultancy report for the CEO which identifies and analyzes using an appropriate model the internal contextual feature that could influence the success or failure of this proposed strategic change for PSI. Let's read this again. Success of an attempt at managing change will be dependent on the context on which the change takes place, right? किस बात का change है, किस context का change है, उस पे बहुत ज़्यादा matter करता है. Here, the keyword that we have is context, and the other term that we have is change. I hope it rings a bell to you. You need to prepare a consultancy report. मैंने कल ही बताया था, questions different formats में आएंगे, and report is one of them. For the CEO, which identifies, analyzes, and uses an appropriate model. Now, question में directly कहा है कि भाई model use करना. Terms दिए हुए हैं, contextual and change. The internal and contextual features that could influence the success or failure of this proposed strategic change for PSI. 16 marks का question है ये. 12 marks के लिए आपको एक model use करना है. जो model के हैं keywords, context और change. Professional skills marks are available for demonstrating communication skills when informing the CEO of the internal contextual features. हमने कल 3 मॉडल्स देखे थे, राइट? जो प्रॉपर मॉडल्स थे, उसमें से एक ही मॉडल है जो कॉन्टेक्चुअल की बात करता है और चेंज की बात करता है. ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्चुअल चेंज, बोलोगन एंड होप हेली, राइट? कभी कभी उसके टर्म्स याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ना वो याद रह जाता है, राइट? सो मे बी वो अगर आपको याद रह जाए तो यहाँ पे तो सीधा अप्रोप्रिएट मॉडल यूज करने की बात की है, एंड कॉन्टेक्चुअल चेंज के ऊपर एक ही मॉडल है हमारे पास, तो इट्स नॉट लाइक
कर्ट लेविन का मॉडल ये आ जाता है तो हम वो यूज कर सकते हैं, वो भी नहीं यूज कर सकते, राइट? तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग ज्यादा होगा, राइट? बट अगेन, अगर आपको पूरा का पूरा स्ट्राइक नहीं हो रहा है, बोलेगन एंड होप हेली भी स्ट्राइक नहीं हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट भी स्ट्राइक नहीं हो रहा है, तो फिर गो जेनेरिक एंड इसमें से आपको सीईओ को कन्विंस करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन रेलिवेंट लगती है उनको लिखो, राइट? मैं आपको जो ये स्ट्रैटेजी बता रही हूँ वो आपको एक बेस मिनिमम पे एटलीस्ट लेके आएगा, rather than going blank on a question. You would do something which is giving or adding value to your marks. Okay. रिपोर्ट लिखना है, रिपोर्ट फॉर्मेट में लिखेंगे दिस इज मार्क्ड रिपोर्ट है, इंट्रोडक्शन से शुरू होता है, बॉडी पे जाता है, एंड इफ यू वांट कंक्लूजन डाल सकते हो. Introduction is talking about what is the purpose of the report. This report identifies and analyzes the internal contextual features that could influence the success or failure of your proposed strategic change for PSI. JSW argued that successfully managing change depends on the context. This context is made up of a number of factors or contingencies, particularly to the organization under consideration. How change is managed in a relatively small privately owned firm like PSI is very different on to how it might be managed in a large firm, right? Obviously, when you are writing the introduction, शायद आप इसको इतने ब्यूटीफुली ना लिख पाओ, ठीक है? आप इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हो, क्या पर्पज है आपका, उस पे जाओ. For the CEO, which identifies and analyzes using appropriate model to the internal contextual features, right? And could influence the success or failure of the proposed strategic changes. हमको पता है सीईओ क्या चेंजेस की बातें कर रहे हैं, राइट? सो रिपोर्ट में अगर आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा है कि ऐसे अच्छे से जीएसडब्ल्यू का कोई इन्फो डाले, इट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट. इंट्रोडक्शन में राइट अ जेनरिक थिंग दैट दिस रिपोर्ट, उसका पर्पस क्या है, राइट? आप क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे इंटरनल कॉन्टेक्चुअल फीचर्स फाइंड आउट करेंगे जो सक्सेस या फेलियर का हेल्प करेगा फॉर द स्ट्रैटेजिक चेंज ऑफ पीएसआई. क्वेश्चन में डायरेक्टली मॉडल की बात करी हुई है, राइट? तो जेएसडब्ल्यू यूजेस द वर्क ऑफ बोलेगन एंड होप हेली. आपको जेएसडब्ल्यू और बोलेगन होप हेली का अगर रिलेशनशिप नहीं पता है, देन ऑल्सो इट इज completely fine. You can completely start with Bologan and Hope Haley's change या contextual features, right? जहाँ पे ये सारे फीचर्स थे हमने कल डिस्कस करे थे, राइट? The first is time. PSI is not facing any immediate financial or business problem, so there is no apparent need of a rapid change. Right? Definitely, the company is looking forward for a good bidder, but it does not have such financial crisis कि वो emergency में या फिर एक bargain purchase में चला जाए. When we talk about the scope, the degree of nature should not be underestimated in a relatively small firm like PSI. Supplying a clear, defined segment supported by a vertical marketing strategy is very different to the horizontal marketing strategy required for the proposed move into the general retail market. इनका स्कोप पहले क्या था? कंपनी का स्कोप था bespoke सॉफ्टवेयर फार्मेसी, रिटेल फार्मेसीज. अब इनका स्कोप एक्सपैंड हो रहा है, जेनेरिक एंड एनी रिटेल इंडस्ट्री, राइट? सो कंपनी इज लुकिंग फॉर एन एक्सपेंशन, company is looking for diversifying into a different market, company is looking for an enhanced market share. Preservation. Software development skills are a crucial resource and capability and must be preserved to enable the proposed strategic change. The retention of the software team's expertise and motivation is essential. If they are upset by the proposed change and disturbed by the further pressure it is likely to create, then it is unlikely that they will support. Right? यहाँ पे when you are developing softwares, आपके techies आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असेट्स हैं, राइट? जो हम सिनेरियो देख रहे थे, आपने नोटिस करा होगा कि उसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डायरेक्टर है एंड उसका टीम है, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द शिफ्ट और द ग्रोथ बिकॉज दे कैन प्रेजेंटली ओनली नॉट टेक केयर ऑफ व्हाट दे हैव. सो यहाँ पे उनका प्रेजर्वेशन, उनका टेक्निकल नॉलेज, उनका एक्सपर्टीज को प्रिजर्व करना इज आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड मे बी द कंपनी कैन वर्क इन सच अ डायरेक्शन वेयर देयर इज अ विन विन सिचुएशन
for both of them. Diversity. Change may be helped if there is a diversity of experience. However, change may be hampered if the organization has followed a particular strategy for a number of years. यहाँ पे diversity इनका एक new growth है, right? That means chance है कि उनके लिए ये growth prospective होगा. They have done well in industry, and the growth is visible in the past 3 years if we look at the financials, right? First year में 1% growth, second year में 3% growth, right? So the company is growing pretty decent. There are chances that when it goes to a different market, a diversified market, they would have the same kind of scope there too. Capability. कैपेबिलिटी जब एक कंपनी की बात कर रहे हैं, स्पेशली पीएसआई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ों की कैपेसिटी अच्छे से होनी चाहिए. एक तो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम की और दूसरी सॉफ्टवेयर की. कंपनी के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन कंपनी के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या वो डिपार्टमेंट अब ग्रो करने की कैपेसिटी में नहीं है, क्योंकि जो उनके पास एग्जिस्टिंग मेंबर्स है या क्लाइंट्स है उनको ही वो लोग अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, राइट? सो वहां पे एक कैपेबिलिटी का एक क्वेश्चन आ जाता है. बट सेल्स एंड मार्केटिंग टीम इज डूइंग प्रीटी वेल. वो लोग enthusiastic है. दे आर ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज द मार्केटिंग डायरेक्टर इज एन अलाई ऑफ द सीईओ, राइट? सो दे बोथ आर ऑन द सेम माइंड सेट. तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग तो करेंगे, लेकिन पीछे दिस सेक्शन माइट गेट अफेक्टेड, द सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सेक्शन. Capacity concerned with resources such as people, finance, and information. Detailed analysis will be necessary for the PSI, but as of now, the company looks that it has got pretty much money, but it is not able to meet up the resources and the people side, especially for the softwares and the software that has got problems, right? So this is something which the company needs to look into कि capacity उनका शायद financially strong है और वो उनको software का टीम डेवलप करने के लिए यूज करना चाहिए. रेडीनेस यहाँ पे मिक्स रिव्यूज हैं. There is no evidence that organization is ready for the type of change that you propose. In fact, the current pressure on the software development team suggests that they may not even welcome a proposed new strategy. What they might be ready for is a strategy that leads to consolidation of a pharmaceutical product so that faults are fixed and new requirement released on times. Here, same example of mine goes कि अगर मैं जाके 50 केक्स का ऑर्डर लेके आऊं, लेकिन बैकएंड में शेफ्स बना नहीं पाएंगे, तो वो रेडीनेस कंप्लीट नहीं हो रहा है, राइट? सो वहाँ यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है. पावर, यू हैव द अल्टीमेट पावर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, sorry, reinforced by ownership of the majority of the shares. However, you need to secure the cooperation of the software development director to make progress. Otherwise, there is risk that forcing through a strategy may turn out to be something wrong for PSI. राइट? इफ यू नोटिस हियर, यहाँ पे जो सीईओ है और जो मार्केटिंग एंड सेल्स डायरेक्टर है, वो दोनों काफी एंथुजियास्टिक है टू ग्रो, लेकिन सॉफ्टवेयर is reluctant to do it because it can't even make up for what it has in hands currently. अगर ओवर पावर यूज किया तो चांसेस है कि जो ये एक्सपर्ट्स है दे माइट लीव द कंपनी एंड बिकम्स वेरी रिस्की फॉर अ कंपनी टू वर्क विदाउट द पीपल दैट इट हैज, स्पेशली द experts that it has. So what kind of conclusion we can give here? As I said, report है, conclusion दे सकते हो. An analysis of the context for the change in PSI should provide warning signs to you. Although you have, as CEO, the power to impose change, these are the concerns about the scope and capacity for change that make it very difficult for PSI to preserve its current resources and competencies. Right? And they have got a longer answer here, but I can conclude it in my language. As you also can conclude it in your language, you don't have to copy paste this. क्वेश्चन में इश्यूज क्या है हमको क्लियरली दिख रहा है, राइट? कंपनी के पास टाइम है, कंपनी के पास फंड्स है, कंपनी के पास ग्रोथ स्ट्रैटेजीज है, राइट? बट कंपनी के जो सीईओ का प्रेशर है कि दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू डाइवर्सिफिकेशन, इज समथिंग जो वो लोग शायद रिसोर्सफुली एंड पीपल्स परस्पेक्टिव से या फिर एक्सपर्ट्स परस्पेक्टिव से मेकअप नहीं कर पाएंगे एज ऑफ नाउ.
So if the company still wants change, when I'm saying company is a CEO, if the CEO still wants change, he should assure that he is taking his software developing team and doing things with them, right? He can't do things by himself. He needs to get help of these people to get things rolling, right? So this is what you can write in the conclusion. As I said, ये आंसर्स बहुत बड़े हैं या फिर ये आंसर्स बहुत ही वेल डिजाइंड है, राइट? बट ये क्वालिटी आप ला सकते हो अपनी एग्जाम के आंसर्स में इफ यू मेक श्योर दैट वो प्रीसीन मटेरियल है ना आप अच्छे से समझ जाओ, राइट? अभी जब मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, मैंने खुद भी क्वेश्चन पढ़ा आपके साथ, तो एक बहुत ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आ जाती है क्वेश्चन की। फिर उससे रिलेटेड जो आंसर्स होते हैं उसकी भी क्वालिटी इंप्रूवाइज हो जाती है। सो आंसर की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्री सीन मटेरियल को भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, so this is how you will answer a managing strategic change question. Give me 1 minute, मैं इनको switch over करती हूँ next question से। Yes, here it is. This is the second topic that we did yesterday, which was leading and managing projects, right? जिसमें हम एक project life cycle की बात करते थे। यहाँ पे off-road करके question है, which is also something which is on that direction. Let's read it. The town of Off-road in Eurasia has a mayor. The town of Brighttown in Eurasia has got a mayor who is elected every 5 years by the people in the town, who is responsible for, amongst the other things, the traffic policy also of the town. A year ago, the mayor instigated a traffic light project to reduce traffic congestions as traffic lights in the town. Right? So इसका अगर आप नेम भी देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मल से लिखा हुआ है ट्रैफिक लाइट LITE, right? So what does it try to say? Rather than relying on fixed timings, he suggested that a system should be implemented which made traffic lights sensitive to traffic flows. Okay, काफी innovative है. So, what is the question? The question is about a town, Bright Town, in a country called Eurasia, जहाँ पे mayors every 5 years elect होते हैं और उनकी work profile में transport policies भी होती है. Last mayor, who is also a project sponsor is the one who gets the maximum accolades and losses from anything, right? उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया ट्रैफिक लाइट, एंड ये ट्रैफिक लाइट एक ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो वो ट्रैफिक लाइट्स को उसके सेंसिटिविटी के हिसाब से मूव करेगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर 4 डायरेक्शन से कार्स आ रही है, व्हीकल्स आ रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा व्हीकल्स का पाइल अप हो गया है, मे बी वहां पे वो ग्रीन सिग्नल दे देगा और वहां से ट्रैफिक रिलीज करता जाएगा, राइट? सो ऐसा कुछ सेंसिटिव ट्रैफिक फ्लो मूवमेंट के लिए is what he is planning to do. That's what they're explaining. So if a queue built up, the light would automatically change to green. The mayor suggested that this would have a number of benefits. Firstly, it would reduce harmful emission of areas near traffic lights, क्योंकि जितना ज़्यादा hold up time होता है vehicles का on the traffic light, pollution emission, carbon emission ज़्यादा होता है. It would improve the journey times for all vehicles, leading to drivers being less stressed, right? क्योंकि फिर आप एक टाइम पे एक्सपेक्टेड टाइम पे कहीं पहुंच जाओगे. He also cited evidence from cities overseas where predictable journey times has been attractive to flexible companies who would set themselves up anywhere in the country. And he felt that the new system would attract such companies in the town. So यहाँ मेयर का इंटेंशन सिर्फ कार्बन एमिशंस रिड्यूस करना या ट्रैफिक रिड्यूस करना नहीं है, बट उनका ऑल्सो एक इंटेंशन है कि अगर कम कंट्री में या सॉरी अगर इनके टाउन में अगर प्रिडिक्टेबल जर्नी टाइम पता चले तो कंपनीज वुड लाइक टू कम एंड सेटल डाउन देयर बिजनेस हियर. Maybe that is an intention to increase the economy or flourish the economy of the city or town.
Eurasia government has a transport regulation agency called Off-Road. Part of Off-Road's responsibility is to monitor transport investments, and it was originally critical for Brighttown traffic light project because the project's benefits were intangible and lacked credibility. The business case did not include a quantitative cost benefit analysis. Off-Road has itself published a benefit management process which classifies benefits in the following ways, right? So अब जब इनको ये एक नया ग्रोथ करना है, ट्रैफिक लाइट नाम का जो उनको सॉफ्टवेयर लाना है, उसके लिए there is this regulation agency which is called ऑफ रोड, जिनको ऑनबोर्डिंग करना है. लेकिन इनको ऑनबोर्ड करने से पहले जो एक बेसिक सीबीए होना चाहिए था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो कंपनी ने नहीं करा हुआ है. But off-road has published benefits of management for itself, like a financial benefit, can be confidently allocated in advance of the project. Thus, if the investment will save $90,000 per year in staff costs, then it's financial benefit, right? So, अगर आप automatically traffic को shift करते हैं, तो staff cost में there is a saving. Quantifiable benefit is a benefit where there is a sufficient credible evidence to suggest in advance how much benefit will result from the project. This benefit may be financial or non-financial, like the energy saving will happen from new building might be credibly predicted in advance. And however, the exact amount of savings cannot be accurately forecast because you don't know how many people would be able to benefit or save the carbon emission. Measurable benefit that can come out of here, which can only be confidently assessed post implementation, so cannot be reliably predicted in advance. Increase in sales from particular initiatives is an example of a measurable benefit. Which may either be financial or non-financial. So कितने एक्सटेंट तक जो बेनिफिट आएगा उसकी और क्लैरिटी अब नहीं, अभी नहीं है, मतलब फाइनेंशियल वैल्यूज हमारे पास और है नहीं. ऑब्जर्वेबल बेनिफिट्स में क्या होगा, स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप्स विल डिसाइड using agreed criteria that has been realized or not. Such benefits are usually non financial. Improved staff morale might be an example of observable benefit. 1 month ago, the mayor's election saw the election of a new mayor with a completely distinct transport policy with different objectives. जो पहले मेयर थे उन्होंने ट्रैफिक लाइट के प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू करा था एंड ऑफ रोड को ऑन बोर्ड किया था, राइट. उसके बाद डेफिनेटली उन्होंने सीबी एनालिसिस नहीं किया उसका, लेकिन इन्होंने ऑफ रोड ने अपना खुद का एक एनालिसिस जो काफी वेग एनालिसिस है वो बना के छोड़ दिया. अब क्या हो गया, नए मेयर सिलेक्ट हो गए और उनकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज अर्लियर मेयर के ट्रांसपोर्ट पॉलिसी काफी डिफरेंट है. सो लेट्स सी इनकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज क्या है. She wishes to address traffic congestion by attracting commuters away from their cars and onto public transport. Part of a policy is a traffic light system which gives priority to buses. The town council owns the buses which operate in a town, and they have invested heavily in buses which are comfortable and have significantly lower emission than the conventional cars used by most people in the town. अर्लियर मेयर का विजन क्या था, कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है, ट्रैफिक प्रिडिक्ट करना है, एंड दिस माइट अट्रैक्ट पीपल टू कम एंड स्टार्ट द बिजनेस इन द टाउन. नए मेयर का क्या पॉलिसी है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करें और उससे कार्बन एमिशन कम करें, एंड ट्रैफिक लाइट्स पे बसेस की एक सेपरेट लाइन हो जहां से बसेस का फ्लो चलता रहे ताकि लोग प्रमोट हो बसेस यूज करने के लिए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए. The new mayor wishes to improve the frequency, punctuality, and conveniences of these buses so they tempt people away from using their own cars. This will require more buses and more bus crews, a requirement with the major presence as being good for the unemployment rate in this town. It will also help the bus service meet punctuality service level, which is published 3 years ago but has never yet met. A reduction in cars and an increase in buses will help us meet our targets. That is what the mayor claims, right? So यहाँ पे इनका focus क्या है कि भी employment बढ़ाएंगे, right?
या फिर सर्विसेज जो बसेस देती है उसकी पंक्चुअलिटी को इम्प्रोवाइज करेंगे. The mayor has also suggested a number of initiatives to discourage people from taking their own cars. Now, she intends to sell two car parks for housing land, raising to 3,25,000. And this will reduce car park capacity from 1,000 to 800 car spaces per day. She also intends to raise the parking fee from $3 to $5. Car park occupancy currently stands at 95%, so it is difficult to achieve 100%. And the same occupancy rate is expected when the car park is expected or capacity is reduced. The new mayor believes that her policy signals the fact that Brighttown is serious about its green credentials. This, she says, will attract green consumers to come and live in our town and green companies to set up here. राइट. सो उनका माइंडसेट क्या है, उनको जो नए मेयर है उनको मेक श्योर करना है कि कैसे ना कैसे कार्स डिस्करेज हो एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़े. जिसके लिए वो क्या कर रही है, वो टू पार्किंग्स की कॉस्ट बढ़ा रही है, वो पार्किंग कैपेसिटी जिससे ओवरऑल रिड्यूस होगी. सेकेंड, वो पार्किंग फी इंक्रीज कर रही है. राइट. ये चीजें, द टाउन द टाउन विल बी मोर ग्रीनर एंड पीपल वुड लाइक टू कम हियर एंड सेट अप देयर इंडस्ट्रीज हियर. राइट. सो ये इनका विजन है और दूसरे मेयर का डिफरेंट विजन था. These companies and consumers will bring great benefit to our community, which is obviously the idea from the last one also. To emphasize this, she has set up a Go Green team to encourage green initiatives in the town. The traffic light project to tackle congestion proposed by former mayor is still in the development stage. The new mayor believes that this project can be modified to deliver her vision and still be ready on date promised by her preceders. Right? Now, let's see what the question is. Project sponsoral change हो गया अब. A term of reference, like a project initiation document, project charter, was developed for traffic light project to reduce traffic congestion. Discuss what changes will it have to be made to the term of reference to reflect the new mayor's vision. Right? छोटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. पिछले मेयर का माइंडसेट क्या था या फिर प्रोजेक्ट चार्टर क्या था कि हम ट्रैफिक लाइट्स लगाएं जो सेंसिटिव हो एंड जो जहाँ पे ज़्यादा कंजेशन है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, उसको रिलीज करें ताकि टाइम पे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके, कार्बन एमिशन स्टॉप कर सके, और अगर पंक्चुअलिटी या एस्टिमेटेड टाइम एक्यूरेट है तो जाके कंपनीज आपकी टाउन में आके एस्टैब्लिश होंगी. द न्यू मेयर क्या बोलती है कि कार्स को ही डिस्करेज करो, बसेस यूज करो, ट्रैफिक लाइट्स यूज होंगे, लेकिन वो ट्रैफिक लाइट्स अब बसेस को पहले जाने देने के लिए यूज होंगे. सेम कार्बन एमिशन कम होगा, जो उनका भी माइंडसेट था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. कार पार्किंग्स, कार ड्राइविंग को ये लोग सप्रेस करना चाहते हैं अभी, और अगर ये टाउन ग्रीन टाउन हो गया देन डेफिनेटली मोर कंपनीज वुड लाइक टू कम एंड वर्क हियर. सो इनकी टू डिफरेंट माइंडसेट्स हैं एंड इसके हिसाब से देयर विल बी मॉडिफिकेशन इन द traffic light project. Let's see what the answer says. From the perspective of the traffic light project, the change in mayor has led to an immediate change in the objectives driving the project. This illustrates how public sector projects are susceptible to sudden external environmental changes outside their control. The project initially proposed to reduce traffic congestion by making traffic lights sensitive to traffic flow. It was suggested that this would improve journey time for all vehicles using the roads of Brighttown. However, the incoming mayor now wishes to reduce the traffic congestion by attracting car users onto public transport. She wants to develop traffic light system which will give priority to buses. This could ensure that the buses run on time. Project is no longer concerned with reducing journey times of all users, but to assure that the public transport is used more. Congestions for private cars may get worse, and this could further encourage car users to switch to public transport.
The important first step to be confirmed that the new mayor wishes to the project sponsor of the project, and because the project has lost its sponsor of the former mayor, यहाँ पे जो भी नए मेयर बोलेंगे वो ही कंपनी को फॉलो करना है. The revised proposal has a much more wider political scope and is concerned with discouraging car users. Thus, there is also proposal to increase car parking charges, increase the frequency and punctuality of buses in alteration of the car parkings. Only once the scope of revised project has been agreed can the revised project be worked on the new project plans. So this is what, so it's a 4 mark क्वेश्चन. हमको इसको बहुत माइंडफुली क्रिस्प तरीके से लिखना है. ये बहुत ही बड़ा आंसर है. एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा इतना बड़ा आंसर लिखने के लिए, राइट? सो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए थे उनको पिकअप करो, उनको आंसर में डालो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो. ऑब्वियसली अगर आपका मन कर रहा है और लिखने का, रुक जाओ, पहले सारे आंसर्स कंप्लीट करो, देन कम बैक टू दिस. सेकेंड क्वेश्चन वर्थ 14 मार्क्स. हम 10 मार्क्स पे फोकस करके चलेंगे. The new mayor wishes to redefine the business case for the project using the benefits categorization suggested by off-road. Identify cost and benefits for the revised project, classifying each benefit using the guidance provided by off-road. Cost and benefits find out करने हैं. Off-road के साथ पहले जो किए थे वो इतने अच्छे से नहीं किए थे, right? So now we will be looking at the right cost and benefits that we have. The redefined project will have much more tangible effects than its preceders, and this could be classified using the standard approach suggested. Benefits would include one of the financial benefits from selling certain car parks. This appears to be a predictable financial benefit of 3,25,000, which can be confidently included in the CP. Right? So car park से जो आप saving करोगे, जो पैसे कमाओगे, वो एक increase हो गया. Increased income from public bus uses, because अगर buses ज़्यादा use होगी that means revenue public transports में बढ़ेगा. Increase income from car parks. 95% capacity पे चलता है कार पार्क से. स्पेसेस अगर 1000 से 800 हो गई है तो पहले 1000 into $3.95 पे चलता था, right? Now the income will increase from to 800 at $4, same capacity. Punctuality of buses will gain measurable benefits because now people will try to use it more, and of course it's cheaper on the pocket also, so more good. Emission definitely reduce होएगा. Perception of the town to go green, वो जो mindset है कि हमको carbon emission कम करना है, we want to go green, will also be enhanced. So these are the benefits. Let's look at the cost. Cost of purchasing more buses, operational cost to make sure that the buses are running correctly in the right shape and right direction, costs associated with disposal of car parks, costs associated with slowing down drivers, right? All these are the costs that are required. The technical implementation requirement of the project will also change, and this is almost certain to have cost implication because the solution will have to be developed which allows buses to be prioritized. Cost and benefit, simple tha, right? All the cost and benefit are there, right? Financial benefits, non-financial cost, non-financial benefits, everything is there. यहाँ पे क्वेश्चन में third question, I was just running through it, आया. Stakeholder management is a prime responsibility of the project manager. Discuss the appropriate management of each of the following 3 stakeholders identified in the revised project. Right? So what we have here, we have a new mayor, we have got the off-road, and we have got the private motorist or vehicle drivers. Right? So हमको इसको, as it is saying, that stakeholders के matrix में डालना है. Right? अब stakeholders का matrix हमारे पास है, उसको बोलते हैं Menlo's matrix. और मॉडल्स है नहीं, एक ही मॉडल है, राइट? सो उसको आइडेंटिफाई करना यहाँ पे एक मॉडल ड्रिवन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 6 marks with 4 marks of analysis. So let's go for the first one. Menlo's matrix, as I said, स्टेक होल्डर के लिए और कोई हमने सिलेबस में है ही नहीं हमारे, राइट? एक ही है. सो ये आपको स्ट्राइक हो एग्जाम में तो अच्छा है, तैयारी पे बहुत डिपेंड करता है. राइट, सो इनकमिंग मेयर
डेफिनेटली हाई पावर हाई इंटरेस्ट, हमने उसको प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कंसिडर किया है ऑब्वियसली, बिकॉज जो भी डिसीजन वो लेंगी वही डिसीजन कंपनी हैज टू फॉलो. द मेयर इज अ की प्लेयर इन द कंपनी project and should be carefully and actively managed throughout. Mayor is currently enthusiastic about the project, and this enthusiasm has to be sustained. As the likely project sponsor, it will be the mayor's responsibility to promote the project internally and to make resources available to it. It will also be up to her to ensure that the promised business benefits are actually delivered. However, she is also the person who can cancel the project at any time, right? So उनके पास सबसे ज्यादा पावर है. मेंडलोज मैट्रिक्स में हम उनको एक की प्लेयर की जैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑफ रोड जो एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो ये काइंड ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन पॉलिसीज बनाती है, they are critical to previous mayor's justification of the project, and they felt that the business case was solely based on intangible benefits and lacked credibility. It is likely that they will be more supportive of the revised proposal for two reasons. The proposal uses classification of benefits, which it has suggested. The proposal includes tangible benefits, which can confidently be included in the CBA. Off road is likely to have high power but relatively low interest, because obviously जो वो regulations बनाते हैं उसके हिसाब से they've got high power, लेकिन because they have got many companies या फिर many towns जिनके लिए वो ये काम करते हैं, तो इनका particularly एक town में interest कम रहता होगा. An appropriate management strategy would be to keep watch and monitor the situation, making sure that nothing happens on the project which would cause the agency to take a sudden interest in it. And the private people, the people who have been driving cars or vehicles there, these will have a high interest in the project because it impacts them directly, but individually they will have very little power, right? क्यों? क्योंकि अगर कार पार्क प्राइसेस इंक्रीज हो गए या फिर स्पेसेस कम हो गए, स्पेस क्रंच हो गया पार्किंग्स के लिए, तो इनको अपना व्हीकल लेके जाना टाउन में पार्क करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? सो इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, इंडिविजुअली इनका पावर कम है. Their chance to influence policy has just passed, and the mayoral elections are not due for any another 5 years. The suggested stakeholders management approach is to keep them informed, because that is mostly what can be done with them. अब 5 साल तक तो ये mayor change नहीं होंगे. Their response will have to be monitored. If they organize themselves and band together as a group, they might be able to stage disruptive actions, which might raise their power and have an impact on the project. This makes the point that stakeholder management is a continual process, as stakeholders may take up different positions in the grid as and when the project progresses. So, this question has been very correctly answered, saying that individually इन लोग के पास इतना पावर है नहीं, सो यू कैन कीप देम इन्फॉर्म. लेकिन अगर पूरा टाउन एक साथ आके प्रोटेस्ट करने लगा, स्पेशली द मोटरिस्ट और द व्हीकल ओनर्स, then definitely their power will increase. And that is why Menlo's matrix can shift any time from keep informed to key players. Right? Wonderful two questions, and we have in fact covered more than the models that we were supposed to do. Right? In the last question, हमने एक glimpse लिया JSW model, right? Managing change का, Mulligan and Hope Haley के change का, and soft matrix, right? And in this question, we looked into, definitely the question was more on the project base, but it also had Menro's matrix because it was on the stakeholders analysis, right? सो ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी कि एक क्वेश्चन में एक ही मॉडल इन्फ्यूज होगा. मैंने आपको पहले भी बताया था, देयर आर चांसेस कि एक क्वेश्चन में आप दो तीन मॉडल और उनके पार्ट्स एंड पीसेस लेके एड अप कर सकते हो. अगेन रिपीटिंग, एज फार एज क्वेश्चंस के आंसर जस्टिफाइड है, क्वेश्चन समझो, सिनेरियो समझो, अच्छे से समझो, एंड उसके सामने आंसर्स को अच्छे से लिखो, जस्टिफाइड लिखो, कन्विंसिंगली लिखो, तो आपका मॉडल डालना ना डालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, राइट? लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तब आदमी क्या करता है, वो कंफ्यूज होके फिर मॉडल को कॉपी पेस्ट मार देता है, राइट? सो वो वाले स्टेट से हमको बचना है, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे. आई होप ये आपको
थोड़ा सा ऑल इन डेप्थ नॉलेज दे रहा है इन टर्म्स ऑफ द टॉपिक्स जो हमने कल डिस्कस करे थे। मेरे जो टिप्स थे स्टार्टिंग में एसबीएल के, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको वापस देखिए, राइट? कि स्टार्टिंग में मैंने एसबीएल में काफी टिप्स दिए थे, तो वो आपको एग्जाम पास करने में डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है? और कल हम क्या कर रहे हैं? कल हम एक क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं जो एक 100 मार्क का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ये पुराने स्टाइल के क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे एग्जिबिट्स ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है? लेकिन एग्जाम में एक्चुअली 4 to 5 एग्जिबिट्स ही आएंगे, राइट? सो कीप दैट इन माइंड। एंड कल का क्वेश्चन शायद थोड़ा लेंदी होगा बिकॉज एग्जिबिट ज्यादा है। एग्जाम में उससे थोड़ा सा लेस लेंदी क्वेश्चन आएगा, ओके? बट टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू रीड थ्रू द आंसर, आई एम गोइंग टू गिव यू द पॉइंटर्स ऑफ द आंसर, राइट? एंड देन यू विल हैव टू राइट आंसर्स बेस्ड ऑन इट। अपने आंसर को एनहांस करना सीखना पड़ेगा, उसके लिए खुद से राइटिंग शुरू करना पड़ेगा, ओके? So I will see you tomorrow, which is the last day of the YouTube revision, and morning 11 a.m. IST. Join in and get the advantage. Thank you.